Good morning, everyone. Welcome to PG Kapatshala, and this is your host, PG. So, you people must be very surprised that yesterday I sent in my WhatsApp status and other social media platforms that today I will be, explaining the support and resistance of stock market with the help of cricket. And you may even be more surprised at seeing the thumbnail of this video, which has Rahul Dravid's picture over there. So you must be wondering that, yes, support resistance, how is this associated with Rahul Dravid? Okay. Now, the first thing that may come to your mind, I'm sure many of you must have been thinking that, okay, Rahul Dravid and resistance, somewhere it is associated with wall, right? The wall. So, Rahul Dravid को हम लोग wall बोलते थे, WALL. So, wall मतलब दीवार. So, if we are going on a road or something, if we are walking and suddenly we find a wall in front of us, we get stuck there. We cannot reach the wall so quickly, right? So wall is, of course, you can say that it is kind of resistance which doesn't allow you to go to the other side. Okay, तो ये तो एक नॉर्मल सा ख्याल या आइडिया आप लोगों के दिमाग में आया होगा. Many of you must have thought on these lines. Okay, please comment those of you who have thought on these lines that okay, wall means resistance and resistance means Rahul Dravid, and resistance is associated with stock market. So many of you must have thought on that line. Okay, so this is also something which comes very generally to our brain, and because Rahul Dravid is world famous for his nickname, the Wall, right? We know what a great cricketer he was, particularly in Test cricket. He uh, many of times when India needed somebody to defend and defend and defend and draw the Test match, so he was the one who stood like a wall. So from opposition point of view, he was a sort of resistance. Okay, so that is the normal analogy you can bring between Rahul Dravid and resistance or support. Okay, so you can say that Rahul Dravid, when he was batting, he was the resistance or the opposition team, and he was a support for the Indian cricket team. So Indian cricket team ड्रेसिंग रूम में रिलैक्स करता था कि राहुल द्रविड़ है तो मैच जीत जाएंगे, नहीं तो बच जाएगा. और ऑपोजिशन क्रिकेट टीम, बिकॉज राहुल द्रविड़ जब क्रीज में रहता था तो वो लोगों के लिए रेजिस्टेंस था कि इंडिया को हरा पाएंगे कि नहीं, ये राहुल द्रविड़ इज स्टिल देयर इन द बैटिंग क्रीज. But today I will slightly deviate from this analogy, and because support and resistance in stock market is all about levels, right? Say 17,000 is support, 18,000 is resistance. Many of you may be pretty professional traders or investors investing for a long time. You must be aware of this support and resistance thing, but many of my YouTube followers, they are not too much conversant with these terms. Few of them are pretty young also, few of my YouTube followers. So for them, I will explain using Rahul Dravid's example in a different way. Okay, we will talk about levels and we will talk about numbers here. So let me share my screen. Okay, let me open this. So see, so I am a big cricket fan, okay, particularly international cricket. I not only watch India's cricket matches, even when other teams are also playing, I keep a track of their scores and all. So I have been a big cricket follower of international cricket since childhood days, you can say. So I remember during 1996 when Rahul Dravid, debuted for India, made his debut in England. Okay, so there was a talk going on that Rahul Dravid is a very consistent player, but somehow the centuries were not coming. ठीक है, तो सेंचुरी नहीं बन रहा था. So many times he was scoring 80s, 90s, okay, high 70s, but century नहीं बन रहा था. But he was always a very consistent player, technically correct, and from the first test match itself, he was like
pretty consistent, and he scored runs for India from the very first test match. So now we will see what happened in his early part of the career. So in 1996, this was his debut match. 1996, second innings. So this is 95, then 84. Okay. So see here, this is 95, this is 84. So all these are scores that Rahul Dravid scored. 56. There 56. There were a few low scores in between. Then again 81. Okay, after that, this was his first century, 148 South Africa versus India. You must be remembering, many of you. This was his first test century at Johannesburg, I think. So 148, 81. After that, again, see, this sequence 78, 37, 92, 69, 92, 85, 93, 86. उसके बाद 118. तो हम लोग अगर इस यहाँ तक देखते हैं, if we see till this लाइन, ओके, दिस 86 हम लोग अगर देखते हैं, तो मैं एक जगह में लिखता हुआ, तो आप देखो 95, 84, 86, 92, 93, 81, इतना सारा स्कोर्स था उसका पहला 10-12 टेस्ट मैच में, और इन बिटवीन देयर वाज 140, ओके, व्हिच वाज ग्रेटर देन 100. ठीक है. तो नाउ what was happening is he was struggling to score 100. Okay, 8-10 50 हो गया था, 100 नहीं आ रहा था, 100 नहीं आ रहा था. तो सब लोग बोल रहा है, so you people must be knowing that in India how does media and the fans behave, right? Well, yeah, he is very good player, but he cannot score 100. Unless he scores 100, how will India win? So like that people used to say. Even at that time also people were saying the same thing, and in parallel Saurav Ganguly was scoring so many hundreds, but Rahul Dravid was not scoring 100. So how can we bring an analogy of this with, you know support and resistance? So what is resistance? अभी मैं थोड़ा व्हाइट बोर्ड में थोड़ा मैं ट्राई करता हूँ. तो ये एक लेवल है. तो let me try to explain. So this is my 100. Okay, this of saffron color line, this is my 100. Now these are all Rahul Dravid scores. Okay, इतना इतना रन बना रहा था वो, इतना 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 रन बना रहा था. So again at the bottom again, let me draw another color line. So this is 0. ठीक है. This is 0. This is 100. Okay. This is 0 line, blue line, and this saffron line is 100. Okay. In between there were so many scores. से इधर ये वाला है आपका, से ये है 82.
ठीक है, सो आई एम राइटिंग दिस कोर्स जस्ट बिलो दिस लाइन से ये 82 है। Not this. So I will write the top probably. तो ये 82 है, और सिमिलरली ये वाला जो लाइन है इसको आप 90 बोल सकते हो, 95 बोल सकते हो। तो ही वाज सॉर्ट ऑफ गोइंग लाइक दिस, he was reaching here, but he was not able to cross this saffron line. He was not able to cross 100. So 100 was sort of kind of psychological resistance which was walking in his mind. Say 100 क्यों नहीं हो रहा है, 100 क्यों नहीं हो रहा है, बोल के ना, he was sort of panicking and getting out. So 100 was kind of getting to be a psychological resistance for him. Okay, so the same thing happens in stock market also. ठीक है, तो ये मैं 82 लिखा, यहाँ पे बाकी आप जो ग्रीन लाइंस देख रहे हो ये सब 95, 87, 78 ऐसा आप देख सकते हो, विच इज लाइक हिज कोर्स। ओके, उसका जैसे स्कोर इधर हो रहा था, तो ऐसा हम लोग इमेजिन कर सकते हैं। ये व्हाइट बोर्ड में मैं जो दिखा रहा हूँ, तो हम लोग ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि देखो आपका व्हाइट व्हाइट बोर्ड में मैं जो ये ग्रीन ग्रीन लाइन दिखाया, ये सब 100 के नीचे तक ही जा रहा है। तो इसमें से एक लाइन ऐसा गया, इसमें से एक लाइन ऐसा गया जो कि आपका ये 100 के ऊपर तक, ये 100 के ऊपर गया। ये है 148, तो जो कि ये 148 है। ठीक है, तो एक एक लाइन ऐसा गया था बीच में 148 वाला, जो कि वो ऊपर गया था। ठीक है, तो सिमिलरली हमारा शेयर मार्केट में भी वैसा ही होता है कि मैं एक मार्केट का चार्ट खोलता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि राहुल द्रविड़ के लिए जो 100 वाला रेजिस्टेंस चल रहा था उसका दिमाग में या उसका बैटिंग में, कि मैं 80, 90, 70 तो बना रहा हूँ, लेकिन 100 क्रॉस नहीं कर पा रहा हूँ। तो सिमिलरली हमारा स्टॉक मार्केट में भी, तो सो हमारा स्टॉक मार्केट में भी आप देखोगे तो ऐसा होता है, सी दिस एरिया, सी दिस जोन। ठीक है, तो अभी ये जो है ये एक क्लस्टर जोन है, इसके ऊपर मार्केट जा नहीं पा रहा था। ठीक है, तो अभी मैं और आगे दिखाता हूँ आप लोगों को, 2 साल का डेली चार्ट दिखाता हूँ। तो दिस दिस लेस। ठीक है, ये जो जोन है इसको आप और भी थोड़ा इधर करो, तो इसके ऊपर मार्केट नहीं जा पा रहा था। मैं इसको अब थोड़ा नीचे ले आऊँ, आप देख सकते हो कि देखो यहाँ पे, ये देखो क्लस्टर जोन है। ठीक है, तो ये राहुल द्रविड़ का वो 100 जैसा बैरियर बन रहा था, ये 100 जैसा बैरियर है, ये 100 को तोड़ना बहुत मुश्किल हो रहा था। मार्केट इसके ऊपर जो ट्रेड ही नहीं कर पा रहे हैं। देखो यहाँ पे थोड़ा गया था वो बीच में, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा बीच में एक बार गया था, लेकिन वो भी ज्यादा टिक नहीं पाया। तो देखो मैं ये दोनों, इसको मैं अगर जोड़ देता हूँ, इसका हाई, इसका जो हाई है, इसका जो लो है, इसको मैं जोड़ देता हूँ, तो आप देखो इसके ऊपर कितना कम टाइम ही ट्रेड किया था। तो ये राहुल द्रविड़ का वो इनिशियल स्टेज होता था करियर में, जो 100 वाला जो रेजिस्टेंस चल रहा था उसका दिमाग में या उसका बैटिंग में, इस शेयर मार्केट में भी ऐसा ही रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये Rahul Dravid was struggling to cross the 100, and the Nifty was also struggling to cross this 18,500 or 18,200। ठीक है, सो होप दैट ये क्रिकेट का एग्जाम्पल के थ्रू में आप लोगों को, पर्टिकुलरली जो लोग थोड़ा यंग हो,
स्टॉक मार्केट में घुसने का बारे में सोच रहे हो, पीपल वांट टू एंटर इनटू द स्टॉक मार्केट एंड यू वांट टू नो द बेसिक definition of support and resistance, you must be now able to understand that अच्छा resistance support किसको बोलते हैं. When you are struggling to cross a particular level, it becomes a resistance. Same with Dravid's batting and same with the stock market. Same with Dravid's batting, not after आफ्टर दिस प्लेस से यहाँ पे जो उसने सेकंड सेंचुरी मारा था इंडिया जिम्बाब्वे 180, सो यहाँ पे वो तोड़ दिया वो रेस. तो आफ्टर दैट इफ यू सी देयर आर सो मेनी हंड्रेड, 103, 190, 107, 144. तो एक बार वो रेजिस्टेंस तोड़ दिया ना, एक बार वो रेजिस्टेंस तोड़ दिया तो उसको प्रॉब्लम नहीं है. तो एक बार आप अगर इसके ऊपर चले जाते हो, तो मैं थोड़ा पुराना चार्ट दिखाता हूँ निफ्टी का, 10 पुराना चार्ट वीकली का, तो आपको पता चलेगा कि एक बार अगर वो रेजिस्टेंस तोड़ देता है, फिर से वो बॉक्स रहता हूँ, सी दिस. सो ये रेजिस्टेंस वाला जोन बन रहा था. तो एक बार ये जो रेजिस्टेंस वाला जोन है ये तोड़ दिया, ये राहुल द्रविड़ का 100 की तरह है. एक बार 100 का ये बैरियर तोड़ दिया ना, उसके बाद देखो उसका कोई, इट्स नो वन कैन स्टॉप, देयर इज नो स्टॉपिंग. तो राहुल द्रविड़ भी देखो कितना 100 बनाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था लाइफ में इनिशियली. एक बार वो 100 का वो बैरियर तोड़ दिया ना, वो कितना 30 हंड्रेड्स बना लिया टेस्ट क्रिकेट में. ठीक है, तो इसे ही बोलते हैं रेजिस्टेंस. एक बार रेजिस्टेंस को तोड़ देता है, बार बार नहीं तोड़ पा रहा है, एक बार तोड़ दिया तो बहुत आगे निकल जाता है, उसको छू भी नहीं पा रहा था. ठीक है, तो ये हो गया रेजिस्टेंस. अभी सपोर्ट. सपोर्ट जोन कैसे, व्हाट डू यू मीन बाय सपोर्ट. ठीक है, तो अभी ये भी मैं क्रिकेट का एक एग्जांपल से बताऊंगा, और ये भी मैं थोड़ा ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा. ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा. once again we will explain it with another इंडियन बैट्समैन. ओके, उसका भी नाम राहुल ही है, लेकिन वो राहुल द्रविड़ नहीं है, वो केएल राहुल है. अभी देखो, ये मैं जो हाईलाइट कर रहा हूँ ये देखो. अभी क्या हो गया, ये एक रिकॉर्ड है एक्चुअली. ठीक है, मैं आई टोल्ड यू दैट आई एम क्रिकेट फैनाटिक, आई एम वेरी पैशनेट क्रिकेट फैन, सो आई keep looking at these statistics every now and then. तो ये मुझे एक स्टेटिस्टिक्स मिला which I thought that okay this is good to explain the support. तो ये केएल राहुल, ये भी एक राहुल है लेकिन ये द्रविड़ नहीं है, ये केएल है. ठीक है, तो इसका ये देखो, आपका 7 consecutive innings, 7 consecutive innings is scored more than 50. ठीक है, 2017 में 90, 51, 67, 60, 51 not out. See this I have highlighted in blue. तो ये क्या हो रहा था, मिनिमम स्कोर है 51 नॉट आउट, 57, 85, 60, 67, 51, 90. ठीक है, तो ये भी आप बोल सकते हो कि 100 इसका भी रेजिस्टेंस चल रहा था ये टाइम पे. बट लेट अस थिंक a bit differently this time. ठीक है, तो अभी he was in a very good form, KL Rahul at that time. He was also not getting 100, तो उसके लिए 100 रेजिस्टेंस काम कर रहा था. लेकिन if you think from the other point of view, that वो बैटिंग करने जा रहा था, ठीक है, even if he was playing a bad shot or something, his luck was supporting it. Okay, and he was in good form, his luck was supporting him, the bowlers were not able to get his wicket, and he was always scoring more than 50 runs. Okay, he was always scoring more than 50 runs. Okay, so now if I go to the whiteboard, now what is happening?
Okay, now what was happening? This is 50. This line is 50. Okay. So this line is 50. ठीक है, तो उसका जो स्कोर चल रहा था, it was always scoring like this. So every time his score was crossing this uh, blue line. So this is 51, 50, 60, 90, 70, 80. ठीक है, तो मतलब वो लंबा लंबा स्कोर कर रहा था, लेकिन हर बार ये ब्लू लाइन जो 50 वाला लाइन है उसके ऊपर ही गिर रहा था. तो his luck was supporting it, his form was also supporting it. So now can't we say that this 50 was a sort of support for him, because देखो उसका लोएस्ट स्कोर क्या था इधर 51 नॉट आउट. ठीक है, विच वाज आल्सो बेटर देन 50, राइट. तो उसका क्या है, whatever was happening to him at that time, बॉलर आउट भी कर रहा था उसको, तो तब तक 50 रन तो बना लिया हो रहा है, बना चुका होता वो, हाँ, तब तक 50 रन बना चुका है. So he has already scored 50. After that only the bowlers were able to dismiss him. Okay, so when he was going out to bat, so dressing room people they were pretty sure that this guy is not getting out under 50, so he will score 50 again this time. So 50 was acting some sort of a psychological support for him. Okay, psychological support, as well as his form was also good. He was batting well, so he was always beating 50. So अभी ये 50 जो है वो उसके लिए सपोर्ट बन रहा है. Okay, so just like how we saw in Rahul Dravid's case during 1996-97, he was getting a lot of 80s, 90s, 70s, but not hundreds. Okay, only one time he crossed 100, and after that, when he started converting those 50s into hundreds, then the 100 didn't become a resistance. He went, he flied about 20, 25, 30 hundreds in his career. Okay, but यहाँ पे KL Rahul, इसका जो ये पर्पल पैच चल रहा था, ये पर्पल पैच में हम लोग देख रहे हैं कि ये 50 के ऊपर स्कोर कर रहा है. तो मतलब 50 वाज सॉर्ट ऑफ बिकमिंग हिज लकी चार्म, और हिज साइकोलॉजिकल एक सपोर्ट बन रहा था उसका कि 50 रन तो मैं बनाऊंगा ही, मैं बैटिंग करने जाऊंगा. तो ठीक है, तो पूरा 1997 इफ यू सी, इंटर 1997, सो 1997 में सी दिस थिंग, मार्च से लेके अगस्त तक. So from March to August, he scored so many 7 consecutive 50s. Because so this is actually a record. So this is actually a record which I found in cricket Pro, that most number of consecutive 50 innings, most number of 50s in consecutive innings. Okay, so this is some sort of a record. Fifties in consecutive innings. Okay, this is a record test cricket. AD Andy Flower, Shivnarine Chandrapal, ठीक है, केसी संगकारा, रॉजर्स एंड राहुल. ठीक है, तो मैं राहुल द्रविड़ समझा, तो इसलिए मैं ये केएल राहुल को चूज किया दोनों, ताकि राहुल राहुल ये दोनों भाई भाई, राहुल से मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. ठीक है, so I think many of you may have liked this example. Must be something new. I'm pretty sure you get lot of definitions of support and resistance in stock market in many YouTube videos and in many social media platforms, but probably nobody has thought of or tried to explain you through cricket. Okay, so I hope you people like it. Thanks for watching. Have a nice trading day and a nice week ahead. Now we have a shortened week. Today and tomorrow are trading day. Friday again is a holiday. So this week we have 2 holidays. So hopefully I will come up with some new videos. And today also I will try to, let's see how the market closes. So I will try to bring the post-market closing today. If not today, then tomorrow definitely we will have a weekly closing because video. Okay, because tomorrow is the last trading day. So thanks for watching. And yeah, of course, you people have been very supportive, to help me achieve 50 subscribers. So thanks a lot. Well done. Keep it growing and let us grow our family. And I will keep on, igniting you with some more tutorials and more market insights. You keep on sharing it with your friends, relatives, and please comment. Your comments have been very encouraging so far. Again, thanks a lot.
Keep on subscribing, sharing, commenting, and liking my videos. Thank you all. Bye.